Bismillahirrahmanirrahim. Dear 5th class students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is angle and its types or kinds. Angle. Two line segments with a common endpoint form an angle or make an angle. An angle is denoted by this symbol like this. As you know, what you pata bro, 3 is equal to 3, 7 is greater than 2, minus 1 is less than 0. But these are signs. You go equal sign, you go greater than, you go less than, put sign, for angle bana was me away. Angle chama yim symbol se denote karna. It can take other puru triangle chama karna yim symbol se denote. It put two line segments with a common endpoint form an angle. An angle is denoted by the symbol, this symbol. Two line segments. This is point A, point B. You go point A, go bro, you go point B. You go off line segment. I guess line segment is the end point. Off end point goes A, B goes B. A line segment has two end pointers. Bunyam block line segment yimjai. Bunyam yimjai block line segment. Arch end point A, yours is end point C. Magar yet by angle kya. You thought you want one ice. You thought you want common end point ice. Common matlab go, it's a circle arc. This is circle A and this is circle B. You portion should be common. You want two circles, you portion common. This shaded portion is common of these two circles. So let us take this line segment AB and another line segment AC. These are two line segments, but they are not in a position to make an angle. But on your line segment, your kind of A and BMGI, C on paper like this. Go C MGI. A just coincide. We can have the line segment, off line segment AB, block AC, almost end point here. What was yet line segment is end point. Yes, line segment AC so end point. Go angle beneath here. Go Toyo go somewhere, jealous as the line segment, except mirror gasson. Suppose you should go point arc MJ, point P, your line segment arc, arch end point MJ. You are going to block line segment at the end point MJ. Go, we get an angle. This is an angle. Suppose TPY. This is an angle. This is an angle. If I put combo, go should be nice angle arc. Arch line segment AB, block shows AC on the end point here. A. Well, this is the line segment as excited point is paired meet. यहाँ तुमने common end point तुमने आपको दुश्मन इसका AC is end point यम जाए A aspect इधर पर block AB is the end point A aspect but this end point is called vertex of the angle point A is called vertex of the angle या तुम line segment is meet गई vertex of the angle और you say angle या चित्र ना आवासा angle आपको आसान actually ये मतलब इसके तीन नाम होते हैं बोने ट्रेन नाउ कर्म भी एंगल इंडिया ताहिन बखाइन डिफाइन मतलब वन ताय भैया आगो एंगल CAB दुयम नाउ चाहत एंगल BAC और त्रीम नाउ चोस एंगल A. In fact this is one angle CAB or angle A or angle BAC. वो चित्र नाव मगर एंगल छी आपको इधर पर ब्याह मिसाल देंगे तो हम ब्याह मिसाल को ब्रो दिस इज लाइन सेगमेंट PQ This is one more line segment.
or P. Their end point is P. So P is vertex of this angle. Angle R is angle RPQ, but this is a right angle, and this is an acute angle. Bonte acute angle क्या गो, right angle क्या गो, obtuse angle क्या गो, straight angle क्या गो, reflex क्या गो, इधर पर complete angle कछ वना, मगर फिलहाल तो याद तो angle च बना तेली, ये ज line segment गसन कुन जाय meet, या तुम end point आस कुन जाय गसन, तो एम्पल कर काम तो गबरो, जिस तो पता छु ये AC इम जाय AC, this AC and this AB. These are sides of this angle CAB. मैं यहां पर लिखूंगा आपके लिए AC and AB और two sides of this angle CAB. Yus angle में CAB अच side, अख side गोस AC, ब्या गोस AB. गो बह हेकान एक जाय कहीं इम जाय एंगल सपोज में जाय CAB में गस मजबाग A यून क्या अ जाय गए एंड पॉइंट ये यम दोन हुन यमा इम जाय यम जिसान मीट इम जाय इस AC त AB छ यमन एंड छ इम जाय चुन तवाश A मजबाग यमा इम जाय गरो एम पत कर बतय काम बोन त इम जाय व गाका कथ चुन के अश वन व गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट ऑफ दिस एंगल पता गबरो इस वाइट बोर्ड यम के कूनस पे कॉर्नरस पे यम जाय बन एंगल एक यम जाय इथे पर मन यम जाय तथ एंगल यत ते बन एंगल कूनस पे कि अख लाइन सेगमेंट यम साइड यमा ब्याक श्योर यमा ब्याक लाइन सेगमेंट यत बन एंगल मगर यम राइट एंगल इथे पर बना यम जाय अस यत ते बन एंगल यह अलमर अख लाइन सेगमेंट यह ब्याक लाइन सेगमेंट यह गई यम जाय एंड पॉइंट यम जाय यम जाय कॉमन पॉइंट रादर कॉमन पॉइंट यम जाय यह गो वर्टेक्स तो यहाँ पर हमें एक और एंगल मिलेगी राइट एंगल. नाउ लेट us now write the types of this angle. एक्यूट एंगल, इसको उर्दू में कहते हैं जाविया हादा. यह सो एंगल युस एंगल 0 खुद बोड़ आस मगर आस 9 खुद कम. तो इसकी डिफिनेशन इस तरह आएगी, एन एंगल ग्रेटर देन 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. सो एंगल यु 0 खुद बोड़ आस मगर आस 9 खुद कम. सपोज यत प्रोटेक्टर आस निश यह गो सोन प्रोटेक्टर यम वनस यत गो 0 degree, यत गो 10 degree, 20, इथे पे 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. यत बन 90 degrees आय एम नेबर ये गस यत बन 100 degree, 110, इथे पे गोस 120, 130, 140, 150, पोतुस यम जाय 160 180. गो अस पता गोथी अगर सीधे नमो यम जाय इस पे वापस तेल बन 0 degree मगर अस 0 खुद 10 यत बन 10 degree इस पे एंगल यत बन 20 degree, यत बन 30 degree, यत बन 40, यत बन 50, इस पे यम बन 90 degree. सो ब्याक शवाश गो एक्यूट एंगल ऑन द एंगल यु 0 खुद बोड़ आस यह लाइन सेगमेंट AB. Bond protector, with the help of this protector बनाव एंगल अख. सपोज मे तप डॉट अख
पॉइंट बह कर जॉइन यम और जब बन ये एंगल बन जाए DAB यह 60 डिग्री यह गो एक्यूट एंगल इथे पे ब्याक एंगल यम जाए यह 80 डिग्री TPQ यह 80 डिग्री when angle is measured in degrees this is angle DAB it is 60 degree this is DAB it is angle DAB it is 60 degree and this angle it is angle TPQ it is equal to 80 degree these two angles are acute angles now let us define right angle after this दोयम किस्म राइट एंगल एंगलन राइट एंगल यह गो सो एंगल इस बराबर नमतन आस an angle whose measure is equal to 90 degree is called a right angle an angle whose measure is equal to 90 degree is called a right angle. Go with the help of protractor we will draw here an angle right angle rather PQ is a line segment and we will be able to make this right angle like this CPQ it is a right angle here so angle CPQ is equal to 90 degree this is a right angle let us draw one more angle here right angle CA is a line segment let us draw with the help of protractor here TAC angle TAC is equal to 90 degree you go back angle amuk दुशवे angle right angle right angle तो अम पे ब्याक थवन याद जल्दी जल्दी सो एंगल युस नमत खुद नबर अलाव और 180 खुद कम that is called a obtuse angle obtuse angle an angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called a right is called an obtuse angle is called an obtuse angle obtuse angle go so angle use namth khot alav number d khot alav magar 160 degree kam acha pata as bano woyim jay number degree zaviya ak right angle mo yus im never yes yet put yepar go right angle im never banaw as 130 as lagbag ye ABC go angle ABC is equal to 130 degree is an obtuse angle both tawai bana so angle yus namth kam so go acute yus namthan barabar so go right angle or yus namth never yepati never हालांकि 160 कम गई गई सारी अतन गई obtuse angle
Go so angle, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. Go bro so angle. Use allow us namthan, but akashto kam is. That's one is obtuse angle. Suppose you put 90 degrees area, im never number is put. Yes, 160. Andazan ABC. This angle ABC is equal to 160 degree is an obtuse angle. Next is straight angle. You go so angle is barabar as 180 degree. Na is kam to na is yaad. Go an angle whose measure is equal to 180 degree is called a straight angle. So angle is barabar akas shita is. Suppose your line segment akim jai OA और your country block line segment OB and common point chia it can imja as acute angles maz imja was OA arc line segment block was imja OB and end was ये common point इधर पर ये line segment shema OA block shema OB Yacha bana 160 degrees आएगा और this angle BOA or angle AOB or angle O is equal to 180 degree is called a straight angle. Straight angle, an angle whose measure is equal to 180 degree is called a straight angle. Go so angle is akata shitan barabar is that one is and that is called a straight angle. Go bro all for still angle. Two line segments with a common endpoint form an angle. Also दोन line segment common endpoint as गसान तो meet that angle बना और angle denote गसान by this symbol. An angle is measured in degrees. Then types of the angle. Number one, acute angle. An angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Next is right angle. An angle equal to 90 degree is called a right angle. Then came obtuse angle. An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. और आखिर में हमने ये पढ़ा है स्ट्रेट एंगल ये सो एंगल इस बराबर अखत शितन डिग्री ना इस कम ना इस ज्यादा अच वनान ये स्ट्रेट एंगल तो इंशाल्लाह अगर टाइम आ बेक साथ पर हम ब्रोकन तो बाकी शुक्रिया